This podcast is sponsored by Match My Talent. Hi, we're back with Flirting with the Fish, a brand new episode, but very, very special this time because today we don't have a performing artist, actor, director, music producer, but we have a man of metal in the business world, in the world of entrepreneurship, mentorship, coaching, funding, investing, everything that's as important as an experience creation or an art or a culture is. And that's what I really invite you to listen to this conversation from. So we have the most favorite person that I have been eyeing to get to hear and speak to, Mr. Srikant Sastri, today with us. He's the co-founder of Crayon Data. He's the founder of i3G Advisory Network. He's been the former president of TIE. Allow me to welcome Mr. Srikant Sastri. Thank you. Pleasure being here. So it's an honor. I really fall short of the words to express how honored I am that you agreed to come and meet at our studio. It was just a very humble, casual meetup at a Thai event and you agreed, so it really means a lot. But I must tell you, I'm very hurt. मेरे दिल पे बहुत ठेस पहुंची आज, क्योंकि आपने मुझे अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया. आपने कहा हम लोग क्रिएटर्स हैं, आप किसी और दुनिया से हैं. ऐसा नहीं है. I have written a book. मेरे 110 वीडियोस हैं, शायद मेरी किताब का पिक्चर भी बन जाए. आपने तो मेरे को किसी और दुनिया का बता दिया. बहुत ठेस पहुंची मेरे दिल को. गलती हो गई. ये तो ब्लंडर हो गया. सो ऑब्वियसली ये मेरा मिस्टेक हुआ, बट आप अब वो पूरा जो मैंने बताया प्लस इसको ऐड करके अब सुनिएगा. एंड दैट इज द थिंग कि इसमें अभी और कितना निकलेगा, इनके बारे में कितना निकलेगा. बहुत सस्पेंस है. सस्पेंस है ना. बहुत सस्पेंस. फिर थ्रिलर भी होगा. थ्रिलर होगा, हॉरर भी होगा थोड़ा. हॉरर भी होगा. आपने जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी थी वो मिड 90s का टाइम था, जो कि आज का भारत नहीं है. यू नो, हम उसमें जो आज के लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही कुछ आइडिया ही नहीं कि वो क्या टाइम था. जिन लंबी लाइंस में हम खड़े होते थे, हर एक चीज के लिए एक अलग प्रोसेस था, राइट. उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप आपने करी. यू नो, व्हाई डिड यू चूज टू बी एन एंटरप्रेन्योर जब आपके पास इतने बढ़िया IIT IIM जैसे ब्रांड नेम्स लगे हुए थे? क्या पड़ी थी आपको? You just told me that I'm a mad guy to do that, right? IIT IIM के बाद क्यों एंटरप्रेन्योर बना? लोग सच सोचते थे. मेरी बीवी के लिए तो वैलिडेशन था. मुझे मालूम था ये आदमी पागल है, सचमुच इसने वैलिडेट कर दिया करके. लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है, when I was growing up in a small town of Maharashtra, my father was a CA working for a family-owned business. वहाँ पे मैं देखता था that periodically, when the owners of the company, 3 brothers, used to come to the factory, all the professionals would stand up and literally salam thokte the. And then I said, look, when I grow up, I don't want to do this to anyone. I want to do something on my own. So seeds were sown at that point of time. Obviously, I was still in school, but origin wahan se tha. But that thought remained throughout. So even after going through IIT and IIM, I said I want to be doing something on my own. Startup word coin nahi hua tha, venture capital coin nahi hua tha. तो उस टाइम पे आई न्यू मुझे अपना कुछ करना है, लेकिन मुझे ये भी मालूम था आई डिडंट हैव द मनी और द एक्सपीरियंस. सो आई सेड आई विल वर्क फॉर 5 years एंड देन बिकम अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन टर्म था उस टाइम पे. सो आई वर्क फॉर 5 years. आई वर्क फॉर हिंदुस्तान लीवर एंड मैकन एरिक्सन. तो व्हेन आई क्विट आफ्टर, मुझे फाइनली 10 साल लगे बिटवीन दीज 2 companies. Then I decided to become an entrepreneur, but because I've always wanted to be one. But yes, I was considered mad. And in hindsight, मैं अपने आप से honestly पूछूं, I must have been mad. And you're still mad? I'm still mad. You'll continue to be mad? I'll continue to be mad. He's not going to change. Okay. So आपने business का एक decision लिया कि आप job वगैरह नहीं करोगे, आप business करोगे, right? But business के parameters तब तो बहुत ही different थे, अभी भी आसान तो नहीं है, right? बट आपने जिस स्पेस में आपने मार्केटिंग के स्पेस में, डेटा के स्पेस में, जिसमें जिस तरह की लार्ज कंपनीज बना दी, ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स बना दिए आपने, दैट वाज लिटिल लेसर, इवन मोर अनहर्ड, इवन मोर. माय क्वेश्चन इज कि आपको वो आइडिया कैसे आया? हाउ डिड यू नोटिस दैट देयर इज डेटा, कुछ फंडा है, डेटा कल जाके बड़ा हो जाएगा, marketing requirements, SaaS platforming of the large companies is something that अगर मैं solve कर दूं तो कुछ अच्छा हो जाएगा?
देखो my first business in the mid 90s was a marketing services business. और डेटा वाला बिजनेस क्रेयॉन डेटा 2013 में आया. सो मैं दोनों की अलग अलग बात करूंगा. सो 1995 में हमने ये देखा कि ऑल द बिग टेक एमएनसीज वर कमिंग इनटू इंडिया. इंटेल, एचपी, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल पहली बार आ रहे थे. वी सेड व्हेन दे कम टू इंडिया दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया. उनको हेल्प चाहिए होगा. And therefore, we will be the partners for them for everything. Distribution channel, dealer खड़ा करना, product launch करना, CRM चलाना, customer support provide करना. So that was a hypothesis. कि इनको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. And हुआ ऐसे कि actually उनको उन चीजों की जरूरत पड़ी. And therefore, I want to show you this. ये मेरा उस टाइम का business plan था. आजकल तो एक्सेल स्प्रेडशीट बनते, उस टाइम पे एक्सेल इन्वेंट ही नहीं हुआ था. तो ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट था मेरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको बोलते हैं. तो ये कंपनी के लिए बनाया, कुछ लोगों से पैसे मांगे, ये डॉक्यूमेंट दिखाकर पैसे बटोरे और फिर बिजनेस शुरू किया. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. वाओ. तो ये नीड आपको, क्योंकि आपने HCL, मैकेंजी के साथ में काम किया और आपने उस तरह के बड़े एमएनसीज में काम किया, वहां से आपको समझ आया कि इनके कितने चैलेंजेस हैं? हाँ. सो जब मैं मैकन एरिक्सन में काम कर रहा था, सो I was asked to start a small marketing services division for them. जब मैंने उसका CEO, when I became the CEO, I started interacting with some of these tech companies. That's when I realized कि ये लोग आ रहे हैं इंडिया में in much bigger numbers and they will need support. So which is why work experience is important. So even today, when young people want to start a business, I tell them unless you're from a business family जहाँ पे dining table पे जो रोज business की बात होती है, you have to go and get some experience. And without that, I would have been dead. No, absolutely. मैं भी यही बोलती हूँ कि पहले किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चला लो, फिर अपनी वाली किसी और के पैसे एक्सपेंस पे सीखो. बिल्कुल. हाँ, मतलब ये तो जोक है, but what basically it means is कि पहले get your hands dirty. Correct. Get your feet dirty, hands dirty, and then get on to that. Then how did the idea for Crayon Data come in? So this was interesting. 2010-11 तक I had sold 2 of my businesses. And then for 2 years, the French group, the Publicis group, to whom I had sold my marketing services business, they said, will you stay on as India chairperson for our group? Wow. And my main role there was to go out and acquire 3 digital companies for Publicis group. So I was the in-house M&A person as the India chairperson. Okay. When I did that, I got such a great view कि digital technology, digital marketing किस तरह से किस दिशा में बढ़ रही है. So I knew कहाँ पे opportunities आने वाली है. At the same time, my classmate from IIM Calcutta, Suresh Shankar, who lives in Singapore, उसने एक data analytics company IBM को बेची. So he is the data expert, I was a digital expert. और हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. And we'd always said कि हमको साथ में कुछ करना चाहिए. When we sat down, he had a view from IBM about data. I had a view from Publicis Group about digital. And we said, look, उस टाइम पे data लोगों के servers में बैठा हुआ करता था. Right. Whereas we knew कि जब digital technologies आगे बढ़ेंगी, that data would come in the digital world. दोनों का world converge हो जाएगा. And then we said, ये हमारे लिए unique opportunity है. Wow. And that's how we decided to start Crayon Data. Wow. So you actually saw it coming. Yeah, it was a guess. Sure. Like most things are at one point. So, what are the reasons by which people doing the same thing over and over again today? Suppose e-commerce, right? So e-commerce came, pioneers are pioneers, right? But there are thousands of e-commerce platforms today, right? Everybody is trying to create some uniqueness somewhere, right? Yeah. But essentially, fundamentally the same, right? So why do a lot of them fail today? So दो चीजें हैं. एक तो है कि there is no harm in there being multiple e-commerce companies, because आप innovation का definition देख लीजिए. Innovation का मतलब होता है कुछ नया करना, नया प्रोडक्ट, नया मेथड या नया टेक्नोलॉजी. सो शुरू में एक बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था Amazon और Flipkart, लेकिन आगे चल के फिर वर्टिकलाइज्ड हो गया. ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए पर्पल या नाइका, बच्चों के प्रोडक्ट के लिए कुछ और.
हेल्थ फैनेटिक्स के लिए कुछ और. So ये सारी चीजें नहीं है. And therefore there's no harm with that. The problem arises when you as the founder, particularly if you are a techie who's created a cool app, you fall so much in love with it कि आप ये सोचने के लिए रुकते नहीं हो कि मार्केट को इसकी जरूरत है भी कि नहीं. आपके पास एक हथौड़ा है, फिर आप ढूंढते हो कहाँ पे कील है जिस पे जाके मैं ठोकूं करके. And that is a mistake that people make. So first fundamental mistake that people should avoid is to see कि कौन सा बड़ा समाज में प्रॉब्लम है which I'm out to solve. Right. If it is a big problem or a pain, then you build a painkiller saying उस सरदर्द के लिए मैं एक सैरिडॉन या एस्प्रिन बना रहा हूँ या बना रही हूँ. I think that without that pain and a painkiller, there is no business to be solved actually. So अगर एक entrepreneur ने large enough, big enough problem identify कर ली है, then it's more or less a success. As long as that is the starting point, but that is not sufficient. Problem आपने identify कर लिया. अब आपके पास क्या innovative solution है जो उस problem का हल हो सकता है. और ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, बहुत मेरा फेवरेट एग्जांपल है ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कॉल्ड दीप बजाज हु आई नो वेरी वेल. उसने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया इंडिया में बाय लुकिंग एट हिज ओन फैमिली, द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी टॉयलेट्स फॉर वुमेन. इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, वुमेन के लिए पब्लिक टॉयलेट्स आर अ हॉरर स्टोरी, नॉन एग्जिस्टेंट. So he spotted that problem, real problem. He came up with a simple solution. He developed a solution where women can stand and pee. तो आपको टॉयलेट सीट पे बैठने की जरूरत ही नहीं है. टॉयलेट गंदा हो साफ हो, यू स्टैंड एंड पी. ही क्रिएटेड समथिंग लाइक अ फनल थ्रू व्हिच यू स्टैंड एंड पी. नाउ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है, कोई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ए सिंपल सोल्यूशन टू अ रियल प्रॉब्लम. तो इनोवेशन जरूरी नहीं है कि बहुत तगड़ा कोई प्रोडक्ट हो जो इलॉन मस्क की तरह बना सकता है. कोई भी बना सकता है इसको एक्चुअली. पहले मैंने आपको एग्जांपल पी बड़ी कर दिया था. Problem of dirty toilets for women, created a simple cardboard device, women can stand and pee. That's an innovation. Innovative product. दूसरा है at the completely other end of technology, AI. आजकल जो generative AI बोलते हैं. One of the startups I mentor in Bangalore, they are doing AI generated music. That is innovation to me. It works, takes precisely 2 minutes. Even just 2 days ago, I created a music track in just 2 minutes, for example. एक फ्रंट एंड डैशबोर्ड है, उसमें मुझे सिर्फ चूज करना था 30 सेकेंड का मुझे ट्रैक चाहिए. आपको मूड किस तरह का चाहिए, सो आई पिक्ड जॉयफुल मूड. इट गिव्स यू 20 ऑप्शन, जॉयफुल, सैड, ये वो करके. It allows you to pick the choice of instruments. It allows you to pick the tempo. And you just key it in and AI generates music. That to me is innovation. That's technology to do something that's never been done before. The other one, now I again move to the complete extreme, which is business model. One of my favorite startups, it's called Sanjeevani Goats in West Bengal. Rural Bengal, Singur mein, this guy called Kalyan Kole, he's the entrepreneur. And the reason I love it is it connotes innovation. उसने क्या किया? उसके गांव में उसको जानवर बहुत पसंद थे, बकरियां पसंद थी. But Bengal में the most popular goat is called the Black Bengal goat. Which is supposed to be the tastiest meat. I'm a vegetarian, so I don't know. But the population of Black Bengal goats are declining. Why? There aren't enough male goats for breeding. तो इसने 2 इनोवेशन किए. पहला इनोवेशन उसने ये किया, वो मथुरा आया, गवर्नमेंट का एक लैब है, उनके साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक डिवाइस किया उसने. वो अपने गांव चला गया. लेकिन गांव, बंगाल इज अ बिग स्टेट. How do you go to the smallest of villages and use the artificial insemination technique? वहां पे उसका दूसरा innovation आया. He said, let me catch hold of unemployed young men and women across the state. 3,000 लोगों को इकट्ठा किया जो unemployed थे. उनको उसने बोला मैं आपको ट्रेन करता हूँ कि कैसे ये टेक्निक यूज होता है. तो वो लोग इसके गांव आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एक ड्रम में सीमेंट लेके चले जाते हैं. And they work with the poor farmer in the village to inject it and get the artificial insemination done. He suddenly has a distribution channel with 3,000 people working for him. Win-win situation. Farmer खुश क्योंकि उसकी बकरी becomes
healthier. Yeah. He gives more milk, Yeah. and eventually sells for a better price for the meat in the market. Yeah. These 3,000 people are earning 10,000 rupees a month because they buy each dose for 30 rupees and sell it to the farmer for 100 rupees. Look at कितने लोगों का फायदा हो रहा है. This to me is also innovation. This podcast is sponsored by Match My Talent. बिजनेस तो इंडिया तो हमेशा से बिजनेस ट्रेडिंग का हब रहा है, राइट? हमने ट्रेडिंग ही करी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बने थे. लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज टाइम, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज टाई, ना, जिसको आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, बहुत टाइम तक करा है. वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेट बहुत ग्रो करा है, यू नो, एंड ऑब्वियसली इट्स टेकन इट्स टाइम, बट नाउ आई थिंक इट्स मैच्योर्ड एंड इट्स शोइंग अप इन प्रोमिनेंट वेज. व्हाट डू यू थिंक टाई इज डूइंग राइट? ओके, थोड़ा मैं आई विल गो बैक इन हिस्ट्री. हाँ जी, आपने सही बात करी कि इंडिया ऑलवेज हैज बीन अ बिजनेस नेशन. आप 1600-1700 एडी साल का पीरियड देख लीजिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज एट इट्स पीक. इंडिया वाज 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. राइट. उसके बाद डाउनहिल होना शुरू किया. हम गाली देते हैं ब्रिटिशर्स को कि आप हमारा इकोनॉमी खा गए करके. दैट्स ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी. हाँ, ये बात सही है कि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनें आई, हमारे पास नहीं आई, बट दैट्स ओनली पार्ट ऑफ द रीजन. द रियल रीजन, एंड दिस हैज बीन रिटन अबाउट इन सम बुक्स, कि इंडिया में ट्रेडर्स, जो आर्टिजन्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो बारीकी का काम करते थे, दे वर वर्किंग एज इंडिविजुअल्स. They were not sharing knowledge. Knowledge was not getting institutionalized. Because of which it was not widely available. The next generation was not getting trained. And that is the role that TIE is playing. Today, India has 90,000 startups. But unless they share, unless they support each other, we will repeat the mistake of 1600 and 1700. So the biggest contribution TIE makes is through education, networking, mentoring, providing opportunities for people to talk to each other, share and institutionalize it. That's the fundamental role that TIE plays, actually. And it's been able to do it at a scale. And it's been able to do it at a scale. While it's present in many countries, but different chapters have had different measures of success. We've been fortunate in Delhi NCR that we've been able to build it as an institution. Not every TIE chapter succeeded in doing that. Right. जिस स्पेस में मैं काम करती हूँ, आर्ट एंड कल्चर में, उसमें टियर 2 इज प्रेशियस. टियर 2 इज रिच. लाइक हाउ टियर 1 में कुछ नहीं है. यू नो, द एंटायर थिंग इज इन टियर 2. In your bird's eye view, do you think art and culture is a big enough market in that perspective? Yeah, it's not. No, art and culture is a big market in the sense that India has so many people who are into arts and crafts of different kind, locally, regionally, etc. And by its very definition, craft and art is local. It's not one homogeneous national thing. And therefore it is dispersed, scattered. And if I look at 2 or 3 random examples of how this is translated into business, take Fab India. The ability to get local artisans and craftsmen, providing them a supply chain and then market it to customers globally. Great example. Wow, And to me, that can be one way to do it. The other way to do it is what has been done in the startup sector. Agar aap dekho, why has the startup culture percolated to tier 2, tier 3, tier 4 towns? Part of it is, हाँ ठीक है, people read कि हाँ through on the internet कि Elon Musk is a famous guy, Flipkart $18 billion में बिक गया, it becomes role model. But the hard work still remains to be done, and therefore that is where you have to give the government credit. For example, there are about 200 or 250 startup incubators which are there across the country. They're there in tier 2, tier 3 towns attached to engineering college, government research institutions. वहाँ पे local लोगों को opportunity मिलती है कि जाके हम वहाँ काम करें, सीखें. Now, can you replicate that same model in art and culture? Imagine you have colleges all over the country, art colleges, fine arts के लिए, and you create small local centers where people, arts and craft people who want to convert this into a business opportunity, उनके लिए एक local hub बन जाए, जिस तरह से startups में हुआ है incubators के जरिए. एक incubators का equivalent अगर ढूंढे तो आप फिर उसको formalize कर सकते हैं. जो लोग अपने आप locally काम कर रहे हैं, can you create a hub for them, जो एक दूसरे से सीख सकें फिर.
and that's when the knowledge sharing will go from Correct. like कुछ art forms है जिसमें खानदानी होता है बिल्कुल, काम, बिल्कुल, right? तो वो उस खानदान में रह जाता है और अगर वो खानदान उसको नहीं परस्यू करना चाहता आगे तो वो वहीं ठप भी हो जाता है, right? बट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप दे दो ना वो नॉलेज किसी को, and then it can and that and also then it becomes a basis by which the government can provide funding. उनको मालूम है कि हाँ एक physical center है जहाँ पे हम पैसे देंगे तो बर्बाद नहीं होगा. Right. Building the credibility and credibility for that. Right. So what are some of the distinct decisions that you clearly remember you've taken? हट के एकदम decision लिया है. Okay. Normally लोग ऐसे लेते नहीं हैं, but आपने लिया है और क्यों? 4 डिसीजन मेरे ध्यान में आते हैं. 2 big ones and 3 big ones and 1 minor one. सबसे first decision was that I want to be on my own. I want to be an entrepreneur. ये तो as I said earlier, somewhere in my childhood मेरे दिमाग में घुस गया था and that remained consistent. इसमें कोई logical spreadsheet नहीं बनाया था कि ये decision इस वजह से लिया जा रहा है, but historically वो हो गया. Emotion driven हुआ. Emotion driven हो गया. Second decision was also emotion driven, which is that when I went to IIT, Indian economy hadn't yet opened up. 80% of my classmates went to US to do PhD and work. My parents were putting pressure on me कि तुम भी जाओ. यहाँ पे क्या रखा है वहाँ पे सारी opportunities हैं. So I pushed back. मैं तो इंडिया में ही रहूँगा. उसी डिसीजन से जुड़ा हुआ एक और था. माई सिस्टर लिव्स इन द यूएस. मुझे बताए बगैर उसने मुझे ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर दिया था. अच्छा. एक दिन में 2003-04 में मैं बिजनेस ट्रिप में यूएस जा रहा था. यूएस इमिग्रेशन वाला बोलता आपका तो ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया, आप लेना चाहते हो? तो मैंने बोला अच्छा, बट आई डोंट वांट इट. मैंने वहीं मना कर दिया उसको. So that was the second one that I want to live in India. Third, I'm chronological sequence में जा रहा हूँ. Third one, which was a simple one, कि मैं दिल्ली में रहूँगा, गुड़गांव शिफ्ट नहीं करूँगा करके. Because I like Delhi, I don't like the multi-storied buildings of Gurgaon. And the last one was a decision I took in 2017 that I want to be a free bird. It allows me to do many different things. I don't want to be attached to one organization on a full-time basis. So ये 4 decisions which I can think back. So US क्यों नहीं जाना था आपको? Because I love India. No other reason. I mean, this is a country that gives you so much. How can you not repay? As simple as that. But at that time, your personal opportunities, which could have been larger, wasn't a bargain. Fair enough. I mean, when you know you've gone to IIT, आपको उसके बाद मालूम है आप डूब तो नहीं सकते करके. And therefore, to that extent, that fear is no longer there. So the foundation being strong. I mean, you look at it this way. I went to Kendriya Vidyalaya. Classes 1 to 5, my fee was 1 rupee a month. Classes 6 to 8, my fees was 2 rupees a month. And classes 9 to 11, my fees was 5 rupees a month. दुनिया में कौन सा देश आपको इस तरह के पैसे के साथ full-fledged education दे सकता high quality? How can you run away from this? So you are a man that I see has a lot of values. Okay, you live by a lot of values. It's clearly evident from the way you've been taking your decisions. Do you recognize couple of values that you held on to? And if yes, when did you actually see that they were so intrinsic to who you are? Great question. I never thought of it that way, but the first one that I can think of is कि मुझे शोशागिरी and ostentation बिल्कुल पसंद नहीं है. Frugality is the value that I believe in. And when I look back कि ये कहाँ से आया, it goes back to my student days at Kendriya Vidyalaya. Okay. हमारे क्लास में हर किस्म के बच्चे थे. This was inside an ordnance factory, the Kendriya Vidyalaya. ड्राइवर से लेके, पियोन से लेके, फैक्ट्री वर्कर, सफाई वाला, सबके बच्चे आते थे. And as it happened, there were some people who came from whose parents were professionals, like my father. ऐसा नहीं था कि इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी जिस तरह के आप आजकल देखते हो. बट हमारे एक मैथ्स के टीचर पांडे जी हुआ करते थे. वन डे पांडे जी, ही वाज अ गुड मैथ्स टीचर, बट थोड़े पागल किस्म के थे. एक दिन उन्होंने क्लास में सडनली एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट मार दिया कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन आने वाला है करके.
तो he then went on to explain. He's saying India में revolution इसलिए आएगा क्योंकि there are so many poor people who will revolt because they're seeing other people living lavishly, displaying their ostentation, etc. Somewhere that stayed in my mind that in a country like India, you need to avoid shoshagiri, frugality, because not just because someone's going to revolt against you. मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है. Even then, I just felt in a country like India, it's important to reduce that disparity, and therefore frugality and lack of shoshagiri is an important one. Beautiful. So that's one value. The second one, which I never thought about it, but two people told me, two people who I know very well. My co-founder at Crayon Data, one day he was introducing me to someone, and he said कि मैं सोचता हूँ this guy's got a bias for action करके. And in the sense कि मुझे I hate being in long conferences and meetings जहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं. I'm itching to get into action. I remember when I took over as president of TIE Delhi NCR, one of the first things Saurabh Srivastava told me, who's a guru for all of us, he described it as activist. He said, I know you're an activist, but थोड़ा सबर रखना, patience रखना, other people cannot keep pace with you करके. That was the second one, bias for action. And this is, I never thought about it till these two people mentioned it. And ये दोनों लोगों ने पिछले 2 साल में बोला है. The third one is, I value dependability and straightforwardness a lot. And which is great. When you're running your own business, when you hire people, you can hire people who you think fit the bill. Right. Who are dependable, who will not bullshit around, who will kind of do what they say, etc. The only time where I had a hard time dealing with this was for the 2 years when after I sold my business to the Publicis Group, I was the India chairperson. So जैसे बोलते हैं ना, that as a child, you cannot choose your parent. Likewise, when you join a large corporate, you can't choose who your other colleagues are. Colleagues हैं तो हैं. So वहाँ पे, when in a large corporate, you run into a lot of people who are in the corporate rat race and therefore playing games and therefore will not be straightforward. And I had a tough time there actually. So to me, these are the 3 values that I can think of. One is shoshagiri और नहीं होनी चाहिए, frugality होनी चाहिए, bias for action, and third is I value dependability, reliability, and straightforwardness. Actually, amazing. Has any of these values ever become a deterrent in your success? Yes and no. In the sense, I have been told by most people that आप काम इतना करते हो, publicize क्यों नहीं करते? It's not me. I mean, to me that shoshagiri. मैं काम कर रहा हूँ, कभी काम बोल लेगी अपने आप, but मैं खुद जाके उसके बारे में बात करना. I remember when I was running my first company, Solutions Integrator, we were India's #1 marketing agency and in Southeast Asia. People come and said, PR agency hire karo, शोर मचाओ इसके बारे में. I could never get around to doing that actually. So we could have grown faster. We may have made more money by selling the business if we had been better known. Possibly, who knows? But you slept better. I slept better. Yeah. I don't like to pretend that I am this person where authenticity मेरे ज़रूरी है करके. This podcast is sponsored by Match My Talent. जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का नाम है फ्लर्टिंग विद द फिश. लवली नेम. थैंक यू. सो आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी, बट स्टैंडिंग इन टुडे, आर यू चेजिंग समथिंग? हैव यू बीन चेजिंग समथिंग दैट यू स्टिल चेजिंग? ओके, सो इसका एक सिंपल आंसर दूंगा. व्हाट आई एम चेजिंग टुडे इज कि मुझे एवरी ईयर आई सेट अ गोल. इस साल मुझे कुछ नया सीखना है, नया करना है. इट्स अबाउट लर्निंग and experiencing new things. That's my only trip in life actually. And therefore, if you look at पिछले 1 साल में what the things that I decided to do, I said I will activate my YouTube channel. मेरे पास 100 videos हो गए वहाँ पे. My mother tongue is Tamil, but because I've never lived in Tamil Nadu, my Tamil was never fluent. So पिछले साल I undertook a Tamil speaking fluency course, for example. Wow. So that is the second thing that I did. Then last year I said मेरे पास इतना content है, let me convert that into educational courses. So I just
created content and I pitched to 2 universities. So I taught a full semester course at Ashoka University for undergrad and BITS Pilani School of Management in Bombay. So I became a teacher last year. So for me, the trip is about keeping my mind active. So what I chase is constantly challenging my mind to do things that will teach me new things and do new things. For example, when I decided to launch my YouTube video channel, I have a freelance editor. But I said, अगर वो कहीं छुट्टी पे चला गया तो मुझे खुद करना पड़ेगा. So I learned video editing also, for example. So for me, my only trip, what I chase right now is new experiences. And that's how you always been? Till 2017. I was involved in one business at a time, and therefore you're bogged down in it, have very little time. ये पिछले 6 साल की कहानी है. This is what you picked up and you've been at it. Yeah. But I think अगर हिंदी में बोले तो जिंदगी का सार ही यही है ना. Correct. This is the thing that unless you're learning, right, you're not growing. Right, exactly. है ना. आप उसमें expert बन गए फिर क्या? मेरा एक स्लोगन है, जो सीखा वो सिकंदर. That's true. And जितनी चीजें सीख ली, और what's your point of view about learning distinct things? Like अभी आप एक चीज नॉर्थ पोल कर रहे हो, एक चीज साउथ पोल कर रहे हो. सारे एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है. सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. When I teach a course at Ashoka University or BIT School of Management, जिन स्टार्टअप्स को मैं मेंटोर करता हूँ उनको गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाता हूँ. उनको बोलता हूँ कि आपके स्टार्टअप में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, गिव इट टू द स्टूडेंट्स एज अ प्रोजेक्ट. ये 2 डॉट्स कनेक्ट हो गए. Then some of these startups, some of the students get featured in my YouTube channel also. Right. Yeah. So to me, all the dots get connected somewhere or the other. बहुत unrelated चीजें नहीं है, for example. Nothing is unrelated. Nothing is unrelated. I mean, if you're learning about nuclear science also today, you might just say कि क्यों करना है मुझे. Correct. You know, but उसका application will come in some conversation. Correct. That might be wasted if you don't know about that topic, right? And also, any solution that you create is always richer when you bring diverse experiences or skills to the table, actually. And that's what education system ideally should be doing. Correct. But we as parents and families, right. हम push करते हैं बच्चों को इस दिशा में जाओ करके. Whereas if you take a classical liberal arts curriculum in a country like US, बच्चों को बोलते हैं explore करो करके. And eventually जाके आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे. तो unfortunately I've grown up 40 years too late for this. Yeah. But मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ रहा हूँ. Yeah. नहीं, अब now that we're talking about it, now in the Indian education system also we're talking about it. NEP is moving in that direction. Moving in that direction. That's right. But it's too early to really know that. That's right. What are the things that never mattered to you? Like दुनिया को शायद फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है. आप देखते हो अपने आसपास. You don't care. What, and मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है इसके बारे में. That I've never chased money. And therefore, while you need money to live comfortably, but fancy cars, fancy holidays, fancy gadgets, fancy brands never mattered to me. मेरे घर में एक जोक है. हमारे घर में बहुत सालों तक एक ड्राइवर था, नवीन करके. He was from Nepal. He retired when he turned 50 or 55. उसने एक दिन मेरे वाइफ को बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि बिफोर आई रिटायर इस घर में मैं एक मर्सिडीज गाड़ी चला लूं. देन ही एंड माय वाइफ रीच्ड अ कंसेंसस कि उसके लाइफ टाइम में, मेरे लाइफ टाइम में मर्सिडीज गाड़ी तो इस घर पे आएगी नहीं. ड्राइवर का अल्टीमेट वर्डिक्ट था कि सर तो मर्सिडीज गाड़ी लेंगे भी तो मर्सिडीज का लोगो हटा के एम्बेसडर का लोगो लगाएंगे उस पे करके. So therefore the point is none of these mattered to me, but so none of this has ever mattered to me actually. आपने नवीन की विश नहीं पूरी की? नवीन की विश बिल्कुल पूरी नहीं करी. I still drive an Innova. Oh my God. So money never mattered. Money never mattered. I have only one area where I pamper myself. If I make a long international trip to US or any place which is more than 5-6 hours, I buy myself a business class ticket. Because as you grow older, you need that comfort. So that is the only luxury I allow myself. Otherwise, I wear only jeans. I wear only shirts that I buy on Amazon. My fancy brand नहीं कुछ नहीं. Beautiful. And it never comes. Does it ever come in the way again in the profile that you live? होता है in the sense that if I was to go in a corporate setting, for example, then people expect you to be suited, booted, project a certain personality, but that's not who I am. I mean, my background is very clear. What I do is very clear. I don't want to
cover it and wrap it up and close that just up for the purpose of conveying a different message. हाँ ठीक है. Even when I go to a formal meeting, I might wear a black pair of jeans and I wear a jacket on top. But tie मतलब मैंने पता नहीं कब लास्ट पहना. मैं बेटे की शादी हुई थी तब पहना था मैंने बस. What are your ways or what's your style of making choices? What are your parameters? देखो, two things. You have a left brain and a right brain. One is more logical, the other is more emotional. Right. People assume that if you're an engineer, आप तो बड़े systematically एक spreadsheet बनाओगे, analyze करोगे, 5 option evaluate करोगे, किस option का कितना score आता है उसके बाद में choose करोगे. But अब tragedy बोल लो, अच्छी बात बोल लो, but I do more things from my heart actually. Nice. That is one. The second is I rely a lot on my intuition also. In the intuition मतलब मुझे, for example, आप logically पूछो कि आप इस startup में क्यों invest कर रहे हो, मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा. But at the end of the day, somewhere in my mind, my intuition tells me कि 5 साल ये founder बहुत बढ़िया founder है, genuine founder है. इसका idea बड़ा raw है, but शायद 5 साल के बाद दुनिया बदल देगी. I might take that bet. So a lot of my decision making and choices are therefore made on connecting the dots in my mind and a little bit of heart coming into it rather than an Excel spreadsheet. That is where it is. But on the other hand, when I work, mentor the startups that I do, or whether I spend time at Crayon Data or with the startups, when we look at them कि अच्छा ये startup में अगले 3 साल में क्या problem होगी, looking at their cash runway carefully, there I follow an Excel spreadsheet. But those are not my choices. It's about building a discipline for them actually. But मेरे life के more choices have been done on the fly, on this, etc. मेरे घर में बहुत बड़ा joke है. एक startup था, 2013 में मैंने कुछ पैसे लगाए थे, डूब गए. उसका नाम था आई डब्बा. Okay. मेरे घर में सब हंसते हैं, अरे स्टार्टअप का नाम ही ऐसा, तूने पैसे कैसे डाल दिए करके. But I love the founder, आई डब्बा. Now as it happens, I've stayed, उसका स्टार्टअप बंद हो गया, but that founder moved to Silicon Valley. वहां पे उसने अपना दूसरा स्टार्टअप सक्सेसफुली शुरू किया. मैं जब जाता हूँ यूएस, उसके साथ मिलता हूँ, लंच करता हूँ. I just feel that connect with him. Yeah. So therefore, I made a lot of mistakes because I don't behave like an engineer using a spreadsheet to make choices. But so the answer to your process of making the choices would be more intuition driven. More intuition plus मुझे पता है, based on one North Star goal as I call it, कि मुझे हाँ 10 साल बाद मुझे यहाँ पहुँचना है. Broadly मुझे पता है destination क्या है, रास्ता क्या है, वो intuition से निकलता है. Wow. जैसे मुझे एक बार पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन उसके लिए कोई कैलकुलेटेड रास्ता नहीं था. मतलब रास्ता निकल के आया इंट्यूशन से. उसी तरह से सो एज आई सेड, एक लंबा गोल होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता, जो चॉइसेस होती हैं वो इंट्यूशन से निकलती है. वो दिल जो कहता है कि ये रास्ता लो करके. Flirting with a fish. How's it going? But when you started in the mid-90s, and we did not have these jargons, right? We did not have any of these jargons that we today are so casual about, right? There are these 3 jargons which matters to everybody who's building a business. Is the market size, the TAM, the SAM, SOM, right? And ये डेक पे तो रहता ही रहता है, but बहुत important होता है, because आप डेक पे अगर नहीं डाल रहे हो तो आगे की कहानी तो वैसे भी नहीं जाएगी ना, right? Especially if you're seeking investment. उस टाइम पे तो ये सब टर्म्स नहीं होते थे, राइट? बट जब आपने बिजनेस बनाया, अपना पहला बिजनेस बनाया, आपको कैसे पता चला कि ये मार्केट बड़ा है, मार्केट साइज इज बिग, आई विल बी एबल टू अटेन अ सिग्निफिकेंट टैम? So it's very different from the way it's done today. Today, the 2 hard questions investors will ask is, TAM कितना बड़ा है? If it's less than $10 billion, they're not interested. Right. SOM कितना बड़ा है? If it's less than $100 million that you can reach a revenue level in 5 years, they're not interested. ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था ही नहीं. कहीं और यूएस में था, मुझे मालूम नहीं, हमारे दिमाग में तो था ही नहीं, रडार में नहीं था. बट सो वी टुक अ सिंपल अप्रोच. हमने ये सोचा उस टाइम पे, I mean, at the end of the day, as I said, I was foolish to become an entrepreneur with no background, nothing. हमने 5 साल का प्लान बनाया, saying for the next 5 years,
will we get enough business? कितना धंधा आएगा? Can we make reasonable profit? And therefore we did what I call as bottom up market calculation. Okay. मतलब पहले साल में 5 करोड़ का बिजनेस करना है तो हमें कितने क्लाइंट्स चाहिए और उनसे कितना धंधा चाहिए, वो 5 क्लाइंट कौन हो सकते हैं, कहां से आएंगे. तो बहुत बेसिक सोच थी हमारी. ये टाइम वाला जार्गन तो था नहीं, लेकिन एक मार्केट एनालिसिस की थी एंड आई शोड यू माय मार्केट फीजिबिलिटी एनालिसिस एट दैट पॉइंट ऑफ, उसमें एग्जैक्टली यही डॉक्यूमेंटेड है. So that still was applicable. That still was applicable. Right? That still was you applicable. did think कि मुझे इतना रेवेन्यू करना है. हाँ. So again connected what you were saying कि आपको हमेशा आगे का एक Correct. फिगर एक इमेज क्लियर होता है, राइट? करेक्ट. सो उस टाइम मिड 90s में भी आपने ये सोचा था कि मुझे किस तरह का रेवेन्यू करना है, एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स कि आएगा कैसे. करेक्ट, बिल्कुल. एंड व्हेन यू फाउंड कि हाँ इतने कंपनीज मिल जाएंगे मुझे जो मुझे इतना बिजनेस दे देंगे, तब आपने स्टार्ट किया. बिल्कुल. नॉट बिफोर दैट. बिल्कुल. वाओ. सो विदाउट अ नेम गिवन, बट सो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस don't change or haven't changed? Principles of business don't change. As one fundamental rule that has never changed and will never change. I remember before I started my business, one wise old man, I don't even remember who he was, दिल्ली में वसंत विहार में एक शादी में मिला था. मैंने उनको बोला कि मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ. उसने बोला इट्स नॉट माई जॉब टू इंटरफियर, मैं आपको सिर्फ 2 एडवाइस दूंगा. Businesses fail only for 2 reasons. Either you run out of cash or the partners fight among themselves. इससे ये 2 गलतियां मत करना, आप फेल नहीं होगे करके. एंड सो पार्टनर्स की लड़ाई कभी नहीं हुई हमारी, लेकिन पैसे खत्म होने वाली नौबत कई बार आ चुकी है. आई बीन ऑलमोस्ट ऑन द स्ट्रीट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी saved ourselves. But today when I mentor the startups that I do, my single biggest question, particularly in today's day and age when funding is hard to come by, कि कितने महीनों का या कितने साल का आपके पास कैश रनवे है. The best situation, one of my startups, they have 33 months of runway, and the lowest at the end is 10 months of runway. So that is a discussion I have in every session with them. कि हाँ मैंने maybe I did not perfect that art perfectly for myself कि कैश खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा. तो ये 2 रूल्स परमानेंट रूल्स हैं. पार्टनर्स लड़ाई ना करें और पैसे खत्म ना हो करके. So जब आपके टाइम उस टाइम पे जब आप when you actually were close to bankruptcy like you say, but you had the business model in your head, you had the clients, you had the runway. Why did that come? Why did the situation? Because when I started, I was younger, and therefore when you're young, you do a lot of foolish things. Yeah. So the foolish thing I did was हमारा 5 साल का बिजनेस प्लान था. पहले साल का बिजनेस प्लान हमने पूरा मैक्स कर दिया, मतलब एक्सीड कर दिया. तो हमें जोश आ गया कि इतना अच्छा किया तो सेकेंड ईयर का प्लान बढ़ा लेते हैं और ज्यादा कोशिश करते हैं. तो हमने लोग हायर कर दिए, नए ऑफिसेस शुरू किए, एंड एज इट हैपेंड दैट ईयर अ स्लम्प हैपेंड, एंड बिजनेस डिड नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड, लेकिन खर्चे थे. And therefore we were down to zero. As founders, we were 6 or 8 months behind paying ourselves salaries. For staff, we were paying 1 month behind salary. Suppliers को पैसे नहीं दिए थे, कई सारे suppliers. I still remember 2 incidents. There was a printer. उन जमाने में, आजकल तो email भेजते हैं, उस जमाने में printed brochures and mailers जाते थे. So there was a printer. His name is Mr. Shroff. I still remember his name. वो एक दिन मेरे ऑफिस आया. It was in Kalkaji Krishna Market. He walked up frustrated because उसके juniors को उसने भेजे थे, बहुत सारी बार पैसे मिले नहीं उनको. तो he came to my office, caught my collar and saying पैसे दो करके. So वो भी झेल लिया हमने. And then he filed a case against us, and we settled out of court, and finally we became friends. That was one incident. Second one was on a Sunday, our travel agent, उस time make my trip थोड़ी होता था, travel agents होते थे. Travel agent Sunday को मेरे घर पहुंच गया पैसे दो करके. So as it happened, मैंने घर पे बताया नहीं था किसी को कि मतलब ये situation बिजनेस. As it happened, my brother-in-law from Bombay was visiting. उसने पूछा क्या हो गया. So then I explained to him. Now he was working in a bank of financial service, तो उसको समझ थी. So he gave a personal loan of 50 lakhs, and that helped us tide over, and then we turned the corner actually. Right place, right time. Right place, right time. Correct. So. You must have been inspired by a lot of people. Who comes to your mind clearly? Well, as I said, I've not had a mentor ever, so it's not a direct inspiration or influence. But for different things in my life, I've got inspired by a few different people. For example,
my first inkling when I said I want to be an entrepreneur, way back in the 80s, Dhiru Ambani was clearly the inspiration because he broke the rules. Yeah. तब तक business सिर्फ Tatas और Birlas करते थे. Yeah. And he was the first guy who came in from the streets to do this. So that was one. Yeah. The second set of people I admire are people who I call as underdogs. Indira Gandhi and P.V. Narasimha Rao. When Indira Gandhi first came, लोग उसको गूंगी गुड़िया बुलाते थे. When she first became, she was thought to be a puppet prime minister when the Congress bigwigs appointed her. Oh, but then she came and threw all of them out and took charge. Yeah. Same with P.V. Narasimha Rao. Minority government संभाली India को liberalize किया. So to me, these underdogs are again an inspiration because it shows that look, nothing matters. You can come and change. Yeah. I also value what I call as the outsiders actually. In the sense, if you take various people, if I take our current Prime Minister Narendra Modi also, he was not part of the inner elite of either the BJP, or, which is why he calls Lutyens Delhi in such derogatory term, because it was a closed club, just जो लोग decide करते थे कौन Prime Minister बनेगा. Privileged. So to me, these are all. The other one, जिनकी मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं, this is the founder and Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew. Singapore was a third world nation. उसने ये दिखाया कि एक generation में third world country को आप कैसे first world country बना सकते हो. True. Those 2 books of his are again inspirational. So you're an angel investor. What do you look in founders and businesses that you invest in your personal capacity? So मैंने शुरू के साल में जब मैंने first started angel investing, मैंने बहुत गलतियां करी. I would invest from my heart. कुछ अच्छा लगा आइडिया के बारे में, फाउंडर के बारे में. But now I have become slightly more disciplined. 3 things. And this is what most savvy angel investors or even early stage VCs would do. First and foremost is, मतलब आप, the problem you're trying to solve, is that a real problem? कि ख्याली पुलाव है. Unless there's a real problem to solve, वहाँ पे business कोई खड़ा होने की गुंजाइश ही नहीं है. That is first question. Correct. सेकेंड इज, ठीक है वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, उसके पास आपने क्या इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला है, कोई खास चीज है कि मतलब वो एक मी टू प्रोडक्ट है करके. दैट्स सेकंड वन. थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हाट मेक्स यू द राइट टीम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. डू यू हैव सम स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल कॉपीराइट और आईपी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? मान लीजिए आप बायोटेक सेक्टर में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कोई स्पेशल नॉलेज है वो सॉल्व करने के लिए, कि आप रास्ते से ऐसे ही चले आए कि मैं सॉल्व कर रहा हूं करके. द रीजन आई सेड द थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट if you're a great team, मुझे आप पे बिलीफ आ गया, that's the number one criteria, because in 80% of the cases, even after investment, the idea and the problem changes, because as the investor and the founders make progress, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, नहीं यार ये करते हैं, थोड़ा हट के करते हैं. As long as the team is the team with the right conviction, motivation and capability, वो रास्ता ढूंढ निकालेंगे. So these are the 3 things. रास्ता तो इंसान ही निकालेगा. So that's why I call this the number 1 factor actually. Quality of the team. So आपने जितने भी आप डेक्स देखते हो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई डेक जो फर्स्ट इंटरफेस होता है उसमें कुछ ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन उसके बाद वो उस बिजनेस आइडिया में या उस फाउंडर में ऐसा आपको कुछ मिल गया कि आपने इन्वेस्ट कर दिया? In most cases, when you meet the founder initially, deck बकवास होता है, almost always. But you spend 15 minutes. Normally, the initial conversations are 30 minutes. उस 30 minutes में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है. In the sense, आपको समझ आ जाता है कि ये फाउंडर है, इसमें दम है, इसने कुछ सोचा है ऐसा जो एक genuine problem का solution हो सकता है. If you figure that out in the first 30 minutes, you're not asking that founder to create a deck only to pitch for you. In fact, in more cases than not, हम लोग without that initial deck fund कर लेते हैं, as long as the founder on a piece of paper is also able to explain it. Wow. But on the other hand, 1 साल बाद जब अगले राउंड के फंडिंग के लिए फाउंडर जाता है to a more formal VC, उस टाइम पे डेक जरूरी है. So one of the big things I do, I run a lot of coaching and training programs on how to pitch to an investor and how to create a great deck. Wow. That is required 1 year later, not when they're pitching to me. Flirting with a fish.
How's it going? So ट्रेडिशनल बिजनेसेस कभी भी 2 ईयर 3 ईयर एग्जिट पे नहीं बिल्ड होते थे, Right. है ना? तो आप पहले कभी भी कोई बिजनेस करते थे तो आप जिंदगी भर के लिए करते थे, है ना? अब ये वाला जो हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि इन्वेस्टर को क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में एक्स परसेंटेज पे एग्जिट करना है, तो बिजनेस को उस हिसाब से टर्न अराउंड करना पड़ता है ना? Is it the right framework? So, but it's not 2 to 3 years, ना? If you look at Flipkart, उनका जो वॉलमार्ट एक्विजिशन हुआ 9 या 10 साल के बाद हुआ. इफ यू लुक एट जोमेटो, उनका जो आईपी हुआ 10, 11, 12 साल के बाद हुआ. ऐसा नहीं है कि 2 साल में 3 साल में आपको करना है करके. सी टिपिकल इन्वेस्टर का जो होराइजन होता है, फंड की लाइफ जो होती है 10 साल होती है प्लस 2 ईयर ऑफ ग्रेस पीरियड, 10-12 साल का पीरियड होता है. हाँ, ये हो सकता है कि फंड ऑलरेडी 6 साल पुराना हो चुका हो, दैट टाइम दे इन्वेस्ट, तो देन टाइम कम होता है. बट दैट टाइम व्हाट विल हैपन इज वो फंड अपना स्टॉक किसी शेयर किसी और इन्वेस्टर को बेच देगा. जरूर कोई गलत प्रेशर नहीं लगाएगा कि आपको 2 साल में 3 साल में जादू यू हैव टू मेक ट्रेमेंडस प्रोग्रेस, ऐसा नहीं है करके. सो इफ यू लुक एट ऑल द सक्सेस स्टोरीज, 10 साल तो लगे उन सब में. They've been there with them actually. So इसमें unreasonableness नहीं है. Making losses, whatever. But हाँ, ये होता है कि on the VC side, on investor side, they are throwing so many ideas at you. आपका कितना डिसिप्लिन है कि कौन सा आइडिया आप एक्सेप्ट करें, कौन सा पुश बैक करें. इफ यू ब्लाइंडली एक्सेप्ट ऑल आइडियाज, देन द वीसी का काम क्या? वो मतलब आपसे 3 महीने में एक बार मिलेगा, 10 आइडिया आपके पास छोड़ जाएगा. आप पागल की तरह सारे 10 आइडिया लेके आगे जाओगे तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे फिर. So that conviction is required. Background work तो हमारा है. So time pressure वैसा illogical नहीं है. It's not. Because we commonly hear कि there's a lot of pressure, there's a lot of pressure, but pressure might be because background में काम शायद sufficient नहीं हुआ होगा. Right. So जो हमारा ये पूरा जो startup ecosystem है, ये टर्म वाइज नया है. एंड लाइक वी स्पोक कि ट्रेडिंग इज अ कंट्री और हमारे डीएनए में तो बिजनेस है ही है, राइट? बट ये दोनों चीज के बीच में आती हैं पॉलिसीज, लॉ, लीगैलिटीज, राइट? जो कि हमारे आपके करने से कुछ नहीं होती. देयर इज अ वेरी बिग सेटअप फॉर दैट, राइट? तो हमारी पॉलिसीज एंड लॉज इस बदलाव के लिए रोबस्ट नहीं थे अभी तक. बट ऑफ कोर्स इन द करंट गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ फोकस इज बीइंग डन टू दैट. But I am speaking from a founder point of view. If I am building something जिसके लिए मुझे legal frameworks कम हैं, policies are very out and done और non-existent, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई अप्रोच ही नहीं है कि वो पॉलिसीज ठीक कराने की. और अगर पॉलिसीज ठीक नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशंस को, इन्वेस्टर्स को वो कहेंगे यार तुम जाके कल फंस जाओगे इस चीज में, मैं नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूं फिर? So I think you rightly said that this government has laid a good foundation since the Startup India initiative in 2016 or whatever, which has helped everyone in the sense अब mainstream में आ गया है startup culture. I think the government has done a great job, deserves full credit. I think आप जो बात कर रही है that is sector specific. For example, take crypto as the industry. Regulation था नहीं तो बहुत सारे startup trouble में आ गए. उसी तरह से गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग फॉर एग्जाम्पल. नाउ दीज आर ऑल इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल नए हैं एंड जहां पे गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे हमें रेगुलेशन बनाना पड़ेगा. एंड इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है बिकॉज नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड हैज गवर्नमेंट केप्ट पेस. टिपिकली होता है ऐसा है कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स आगे चलते हैं, रेगुलेशन उसके पीछे पीछे आता है, देखते देखते आता है. बिकॉज हमने कैसे भी बना भी तो कैसे दे पॉलिसी, कैसे बनाए पॉलिसी, रियलिटी हवा में तो है नहीं ना. जैसे एआई ले लीजिए, एआई में भी अभी रेगुलेशन आया नहीं है बट एआई टेक्नोलॉजी आगे निकल गया, स्टार्टअप्स आगे निकल गए. अब पीछे पीछे रेगुलेशन आएगा. कुछ रेगुलेशन होगा इंडस्ट्री अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा बिकॉज गवर्नमेंट को भी इनफ नॉलेज है नहीं. कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स मिलाकर बनाएंगे, एक रेगुलेटर आ जाएगा. तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड फॉल्ट विद इंडिया ओनली. Some countries do it faster, some countries do it slower. But in every country, regulation cannot move ahead of technology. Sure. Technology पहले भागती है, regulation उसके पीछे आता है. But access points में, so could I3G be a place where people can reach and share that this is where we're getting stuck? Would you have sort of a network and wherewithal? इसमें 2-3 forums already active हैं. For example, places like TIE are places where these questions come up.
And then that is one place. Right. The second is that if you look at government itself, it's created various advisory bodies. For example, I'm on the advisory body with the Department of Science and Technology of the government, Right. which is again advisory body. उसी तरह से the government has few other advisory bodies in different sectors. And then they pull in the respective expert जो अपना दिमाग लगाते हैं, government के साथ काम करते हैं, but government system ऐसा है कि time लगता है उसको आने में. But consultative process So है. touch points have touch points हैं actually. बन गए touch हैं. points हैं. Find the right touch Find point. the right, yeah, that's right. And then whatever it takes. That's right. That's can't be right. done. That's right. So I don't think India is doing badly on that front. No. No, it's No. definitely Yeah. better, but it's for a larger information Yeah. of people. जो, Yeah. you know, I also feel when you're stuck, you're stuck. देखिए आप the new industry, if you're the pioneer and the first company, you're getting into uncharted territories. Yeah. तकलीफें तो आएंगी शुरू में because everything is uncharted. जब आपके साथ उस इंडस्ट्री में 5 या 10 कंपनीज आ जाएंगी तो आप एक ट्रेड बॉडी बना दीजिए, एसोसिएशन बना दीजिए, देन यू कैन टॉक टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज विलिंग टू टॉक टू ट्रेड एसोसिएशंस एंड बॉडीज रादर देन इंडिविजुअल कंपनीज. You can't, exactly. Yeah. So what are the things that don't work for you, sir? Like आपके लिए चलता ही नहीं है, चाहे वो एक इंसान में हो, चाहे वो एक कॉन्वर्सेशन में हो, चाहे वो पिच में हो, चाहे वो आइडिया में हो, you know, चाहे वो किसी में, things that just not acceptable for you. One, as I mentioned earlier, I mean, high-level bullshit doesn't work for me because I cut to the chase very quickly to say, yeah, मतलब point पे आओ ना मतलब करके यार. तो मतलब लंबी meetings, लंबे conversation, घुमा फिरा के बात करना, that doesn't fly with me actually. That is one thing that I can definitely say actually. And that's across everything. That across everything yeah. actually. So, at this time, what is your heart really itching to solve for good? Well, I remember when I was at IIM Calcutta, we used to have this guest speaker series, and there was a minister from Canada who came to speak, and she was from an industry background. तो किसी student ने पूछा आप कैसे minister बन गई करके. She said that look, if you're, she was an MBA also. She said, look, as a manager or a leader, if you want to make real impact, then you need to be in the public policy or politics space. That's why I chose to become. So, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर रास्ता निकला, I'd like to be more actively involved in government and policy. That to me is where you can make the most impact actually. वो कब रास्ता निकलेगा देखेंगे उसमें. But आप, like you said, आप vision देखते हो, आप अपना उम्मीद पे दुनिया कायम है. And you'll be so good. Perfect. You. But so do you think that how we do financially in life, do you think that it's got something to do with childhood? Yeah, definitely I would think so, because if you grow up in an environment of family where dining table पे हर रोज पैसे की बात होती है, आज मैंने इस डील पे इतने पैसे बनाए, या आज मैंने ये शॉपिंग करी इतने पैसे बचाए. If that gets ingrained in you, you grow in a certain direction. Unfortunately, मेरे घर में कई घरों में ऐसा डिस्कशन होता नहीं है. Yeah. My father was a CA. Now I would, in spite of that, पैसे की डिस्कशन कभी होती नहीं थी घर पे. And even in my home, I mean, हमारे घर में जोक है कि मतलब पैसा बनाना है तो इस परिवार में मत रहो करके. So because it's never been a focus, it's never been a discussion point. अच्छा पढ़ाई ठीक से करो, go down a good career path, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, सारा डिस्कशन ही वैसे होता है ना. Right. खाने पीने की बात होती है, मतलब अच्छा खाना खाते हैं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, पैसे की बात कभी नहीं होती. कैसे बनाने हैं, कैसे बनाने, करेक्ट. हाँ, ये वो ट्रेडिशनल भगवत गीता वाला प्रिंसिपल है. फल के बारे में मत सोचो, कोशिश करो, फल अपने आप आ जाएगा करके काम करो. तो आपके एक्सपीरियंस में आता है? हो जाता है. मतलब शुरू में फॉर एग्जांपल व्हाइल आई वाज रनिंग माय बिजनेस व्हेन वी वर क्लोज टू बैंक्रप्सी, no one around me believed कि ऐसा होगा, but when I sold 2 businesses, पैसे आ गए. So to me, I still subscribe to that belief. So yeah, so basically आप कह रहे हो कि childhood से subscription तो हो जाता है thought process का, right? And then as we grow up, या तो लोग एकदम rebel बन जाते हैं कि नहीं ये मेरे को नहीं चलेगा भाई, ये मेरा system रहा but doesn't work for me, and then you start reinstating. Yeah, whatever happens for you, you build your peace with it, and that's right. you are on the other end. That's right. You build your peace with what you make. That's right. Absolutely, absolutely. And will you recommend that to the founders
Well, you can't recommend that to the founders. People come with different backgrounds and personalities. Some of the founders I see are very focused on money. Yeah. Some are more chilled out about it. But what I am focused on with them is to say, look, what can we do together to make you successful as a founder? If you become successful as a founder, paise banenge aapke. It's one of the things again. That's right, one of the things. Yeah. But besides the joy of having created something unique. Right. Correct. So as a mentor, I think you will be able to add much more value at the aspect of finding the joy out of creating. Absolutely. The journey itself is a joy. And you sort of instigate and enable that. Every week when I spend half an hour with each of these startups, those 30 minutes with that startup are my most joyful moment because मुझे इतना मजा आता है जो उनको भी आता है करके. And what does that do to you? Oh, I come back full of energy actually, which is why, I have a standing joke with all my friends. When I meet my friends who are older, I tell them, तुम्हारे साथ hang out करना मेरे लिए negativity. I prefer hanging out with all the 20 years old, either at places that I teach or places that I mentor actually. That's where I derive all my energy from. फिर वो क्या करते हैं? वो आपको हटा देते हैं उस ग्रुप से? नहीं, बोलते तुम पागल हो करके. पागल हो तुम. तो ये कहानी शुरू से चल रही है कि आप पागल हो? ये कहानी शुरू से चल रही है, correct. You've always heard that at different Correct. But being mad is great, right? I know, I think so too. You just don't subscribe to anything normal. That's right. And you're okay with whatever comes by. I'm absolutely okay with it. Yeah? Now I'm too old to change. I see थे ना आप शुरू से भी. You've always been comfortable. I'm very with that. comfortable. Yeah. Lovely. So, not just to the young people and not just to the entrepreneur, but everybody who's going to listen to you, and this is for posterity, this is always going to stay there. Today, in standing in 2023, I think India is at par with the world. Yeah. Right? Yeah. We don't need to talk about an India story separately. Yeah. It's pretty much the lines have blurred. Yeah. Right? And you have been at the forefront and in so many other ways leading the change. Yeah. What are the things that people at any age, if you want to lead, not in business or anything, just want to lead, what are the things people should avoid? It's a difficult one. I would say negativity, because India is the place, India is the land of opportunity. But the flip side of it is, why is it India land of opportunity? Because there are so many problems waiting to be solved. You can look at it in a positive light, saying ये तो opportunity है, problem है तब opportunity है. On the other hand, you can say, अरे यार इंडिया में इतनी सारी problems है, negative है, then you get depressed and say चलो मैं छोड़ के Canada चला जाता हूँ, Australia चला जाता हूँ. So I would say that look at India as a place with immense opportunities that no other place in the world can offer. Be disruptive and bold with respect to what you can do, and the world is there for our taking. That to me is it's all about the positive attitude actually. So no matter what, just stay away from the negativity, internal and external. That's right. Lovely. While this conversation can really go on and on, but this is something that I'll treasure, sir, because learning firsthand from all these years of experience that you have really drilled yourself into has been very precious for me. And I'll do my best to make sure that it reaches as many people as it can. While, like I said in my introduction, while I work mostly with little children, their parents, and art and culture, but I feel learnings to same ही होती हैं. I am a little child in terms of my curiosity. I am a parent, and I already said I am also part of the art and culture world. तो आप मुझे बाहर मत करना. नहीं, बिल्कुल नहीं. अब तो बिल्कुल ही नहीं. और आप तो बिल्कुल entitled हो अब तो बिल्कुल भी. और ये. But the questions were great, Sonia. Thank you. It required me to do some deep thinking and introspection, but thank you for that. Thank you. I'm glad that happened for you, and आपके sharing में हमने बहुत कुछ सीखा. Same here. So keep flirting with the fishes in your life. Absolutely. Don't forget to flirt. Yes. That is extremely important. And don't stop imagining your fishes. Thank you very much. Pleasure. Thank you, sir. Thank you. So that was Flirting with the Fish for you, and that was Mr. Srikant Sastri. The links are all going to be in the description. Please enjoy, spread, and share the love. See you.